Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 73, as I'll be continuing with lesson 8, Magnificent Mary. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 73, lesson 8, Magnificent Mary. Students, in my last video, I had written and explained the word meanings. Now today, before I read the lesson and explain it to you, I would like to explain the meaning of the phrases given on the bottom of page 73 and 76. So please write the meaning of phrases of lesson 8, Magnificent Mary. Meaning of phrases. There are two phrases given in the lesson, children. The first one is given on page number 73, bottom of page 73, that is stands for. Stands for means is a symbol of. मतलब बेटा कोई भी चीज जब जो किसी का सिंबल माना जाता है उसको स्टैंड्स फॉर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द वाइट डव, इट इज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ पीस, है ना. तो ग्रीन कलर इज रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी. तो कोई भी चीज जो किसी भी चीज के लिए स्टैंड करती है, दैट इज known as a symbol of. Then the second phrase is given at the bottom of page 76 and that is against all odds. Against all odds means despite all difficulties. मतलब कितनी भी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब नथिंग वाज फेवरेबल. सो दैट मीन्स डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज. एक होता है कि कंडीशंस आर फेवरेबल चिल्ड्रन, बट यहाँ पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स मीन्स कि कुछ भी फेवरेबल नहीं, एवरीथिंग इज अगेंस्ट, बट स्टिल you know that you need to overcome all those hurdles and then you need to move ahead. So the two phrases given in lesson 8 are, the first one is stands for. Stands for is a symbol of, कि कोई भी चीज जो किसी का symbol है, and the second one is against all odds, which means despite all difficulties. So these are the two phrases. I'm sure everybody must have written these phrases in the notebook, children. Now, children, I have explained the word meanings and meaning of phrases. Now, I'll read the lesson for you, children, and then explain the content. So, children, please turn to page number 73, lesson 8, Magnificent Mary. And children, please pay attention and listen to me carefully as I read, because you need to learn the correct pronunciation of the words also. Lesson 8, Magnificent Mary. Mary Kom is a name that stands for patience and hard work. A 5-time world boxing champion, Mary Kom has fought battles not only in the boxing ring but also in her personal life. However,
Mary overcame all the hurdles and achieved many more than many of us can possibly dream of. Like many other sports person, Mary Com's success is an inspiration, but it becomes even more meaningful when we consider her background. Mary was born on 1st March 1983 in a tribal community in the clashes-ridden states of Manipur. Her full name is Mangte Changneji Jang Mary Com. Her parents were poor farmers and worked hard in the fields. As the eldest of her siblings, Mary took care of them from a very young age. Moreover, she used to help her parents earn their livelihood by working in the fields and cutting wood after school hours. Mary was extremely interested in playing different kinds of sports during her school days. She initially participated in several athletic competitions, but soon took up boxing after being highly inspired by the famous Manipuri boxer Dinko Singh. However, her father, who was a boxer in his early days, did not encourage her as he considered boxing to be a male sport. He thought Mary wouldn't be able to find a suitable groom if she continued boxing. Despite all objections, Mary continued boxing even though she had no support from her family in the early days. She couldn't even afford proper shoes and sports gear for herself. She also had to hide from her father during the practice sessions. Mary Com's career started in the year 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. In 2001, she started competing at an international level. She was only 18 years old when she made her international debut at the first IBA, that is International Boxing Association, Women's World Boxing Championship in the United States, winning a silver medal in the 48 kilograms weight category. Mary won the first Women's Boxing Championship in 2001. In the same year, she won the second position in the Women's World Amateur Boxing Championship in the 48 kilograms category. She also won the World Championships in the years 2002, 2005 and 2006. As a result, she was nicknamed as Magnificent Mary. Mary married K. Onler Com in the year 2005 and gave birth to her twin sons, Rechukwar and Khupniwar, in 2007. She took a break from the game during this period, but after some time, she started intense training again. She made an impressive comeback by winning the silver medal at the 2008 Asian Women's Boxing Championship in India and a fourth successive gold medal at the IBA Women's World Boxing Championship in China. She also won a gold medal
at the 2009 Asian Indoor Games in Vietnam. Mary Com's success streak continued as she won the gold medal at the Asian Women's Boxing Championship in Kazakhstan in 2010 and at the IBA Women's World Boxing Championship in Barbados. She also won a bronze medal in the 2010 Asian Games and the gold medal in 2011 at the Asian Women's Cup in China. Mary Com's determination and willpower could be seen during the London Olympics in 2012 when she did not lose her confidence even when she had to change her category from 48 to 51 kilograms. This meant that she had to fight against taller and bigger opponents inside the ring. She confidently accepted the challenge and practiced against male boxers who were taller and had stronger physique than her. Her courage and hard work paid off when she finally won the bronze medal and became the first Indian woman boxer to win a medal at the Olympics. The awards and recognitions for Mary Com have continued over the years as she was awarded the Arjun Award in 2003, the Padma Shri in 2006, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009 and the Padma Bhushan in 2013. She also won a gold medal in the Asian Games in 2014, among many such others in the recent years. Mary Com's success was only possible because of her hard work and determination. Her story is significant because she achieved all the accolades against all odds. She worked with complete dedication towards her goals and fought bravely against all the obstacles that she faced. Thus, Mary Com has all the qualities of a true sportsman. Now, students, about this lesson, this was a biography of Mary Com. A biography is a story of a person's life which is written by someone else. Children, this lesson is the biography of Mary Com. Now, what is a biography? Beta, biography जो किसी भी पर्सन के पूरे लाइफ इवेंट्स के बारे में कोई जब दूसरा लिखता है, उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, दैट इज अ बायोग्राफी. Whereas अगर कोई खुद अपने बारे में, अपने पूरी लाइफ के बारे में बुक लिखता है तो दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी. सो दिस इज द डिफरेंस. Biography is written by somebody else and autobiography is written by the same person about the life. So this is a biography written on Mary Com. Now children, on page number 75, there's a note given at the bottom that Mary Com also has another son, Prince, who was born in 2013. Beta, Mary Com को एक पहले तो we have read in the lesson that she's got twin sons, but besides she has got one more son whose name is Prince, who was born in 2013. So now children, I have read the lesson to you. Now once again I'll revise all the word meanings and then I'll start with the explanation of the lesson. Children, the first new word of the lesson is determination, which means firmness of purpose. बेटा, जब कोई भी चीज, आप कोई भी काम करने को ठान लो और फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए और आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करो,
and then you overcome those problems and then you achieve the goal. That is your determination. कुछ भी हो जाए, what you think that you need to achieve that. That's your determination. Then the second new word is hurdles, which means problems. Hurdles का मतलब होता है बेटा problems. The third new word is clashes ridden. Clashes ridden मतलब full of conflicts, है ना. यहाँ पे मतलब जहाँ संघर्ष ही संघर्ष हो. लाइफ इज नॉट इजी, हमेशा प्रॉब्लम्स ही हैं. क्लैशेस बेटा लड़ाइयों को बोलते हैं. Then the fourth word is livelihood. Livelihood, a means of securing the necessities of life. Beta, for living everybody needs money, and for earning money one really has to work hard. So that is the livelihood. कि हमें अपनी livelihood चलाने के लिए we need to work so that we can earn to survive, to meet the basic necessities of life. Then the fifth word is, children, gear. Gear means equipments. Thing needed. कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हो तो फॉर प्लेइंग क्रिकेट आपको ग्लव्स चाहिए, है ना, स्टम्प्स चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, है ना, हेलमेट चाहिए, है ना. तो ये सारी चीजें, नी गार्ड चाहिए. तो ये सब इक्विपमेंट्स हैं फॉर प्लेइंग क्रिकेट. तो सेम वे इक्विपमेंट्स मतलब इट कैन बी फॉर डूइंग एनी टास्क, है ना. फॉर बॉक्सिंग के लिए भी आपको ग्लव्स चाहिए, है ना, हेलमेट चाहिए, है ना, देन माउथ गार्ड चाहिए. तो ये सारे किसके इक्विपमेंट्स हैं? ये सब बॉक्सिंग के इक्विपमेंट्स हैं. सो गेयर्स को इक्विपमेंट्स बोलते हैं बेटा. देन द सिक्स्थ वर्ड इज डेब्यूट. एंड डेब्यूट, अ पर्सन्स first appearance or performance in a particular capacity or role. Debut मतलब पहली बार जब कोई भी पर्सन का पब्लिक अपीयरेंस हो. ऐसे तो आप पब्लिक में कोई भी बहुत जाता है, लेकिन किसी मतलब उसका जब वो फेमस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी रिलीज होती है और उसमें कोई न्यू स्टार पहली बार डेब्यूट करता है, कि तब से फिर लोग जानने लगते हैं अच्छा ये इसने इस मूवी में से काम स्टार्ट किया. तो दैट इज द debut. Seventh word is amateur. Amateur means non-professional. बेटा कि कोई भी पर्सन, एक होता है कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं फॉर मनी, पैसे कमाने के लिए, बट वन हु पार्टिसिपेट्स इन दी स्पोर्ट्स जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, फॉर फन, नॉट फॉर मनी, दैट इज नोन एज amateur. एक प्रोफेशनल वो होते हैं बेटा जो पैसा कमाने के लिए गेम्स खेलते हैं, और अमेचर बेटा वो नॉन प्रोफेशनल जो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर फन दे प्ले गेम्स. देन द एट्थ वर्ड इज मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बेटा इम्प्रेसिव, एडमायरेबल, जो बहुत इम्प्रेस करे और जिसको लोग एडमायर करें, रिस्पेक्ट से देखें. नाइन्थ वर्ड इज इंटेंस. इंटेंस मीन्स with great energy and concentration. पूरी एनर्जी और concentration के संग कोई भी काम करने को, that is known as intense. Then the 10th word is impressive. Impressive is admirable. जिसको सब लोग जिससे impress हो, everyone respects, looks with respect. Then the 11th word is successive. Successive means consecutive or continuous, लगातार. 12th word is streak. Streak is period, a period of time. 13th, physique. Physique is shape of the body. Like हम सबकी physique different है. Somebody is tall, somebody is thin, somebody is stout. So each one of us got a different physique. Then the 14th word is recognitions. Recognition means appreciation. तारीफ करना बेटा. लोग आपको जानने लगे, आपकी तारीफ करें, दैट इज योर recognition. The 15th word is significant. Significant means important. Significant, important. The 16th word is accolades. Accolades, awards. And the 17th word is dedication. That is commitment. कि आप कोई भी काम करते हो तो आपका कितना कमिटमेंट है, आप कितनी लगन के साथ वो काम करते हो. So, I have explained the word meanings and the meaning of the phrases also, children. Now I'll explain the lesson to you. Lesson 8, Magnificent Mary.
Mary Kom is a name that stands for patience and hard work. Students, now all of us, आज हम सब मैरी कॉम को जानते हैं, है ना? We have seen her on the television, and हम जानते हैं why? Because Mary Kom has earned her name in the field of boxing, and after reading the lesson or after listening in the news, हमको सबको पता है कि आज बेटा जो मैरी कॉम जहां भी है, she is just reached those heights just because of her patience and hard work, कि उसने बहुत मेहनत की और बहुत पेशेंस रखा. पेशेंस रखना इन द सेंस कि अगर हम लोग के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम घबरा जाते हैं, है ना? वी मूव बैक कि नहीं हो पाएगा एंड वी स्टेप बैक. नो, बट पेशेंस रखना कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना. यू नीड टू वेट कि नहीं, हमको अपना जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग रखना है, एंड श्योरली वी विल अचीव व्हाट वी विश. सो दैट इज पेशेंस. सो मैरी कॉम का नाम आज किससे बेटा जाना जाता है? फॉर अ पेशेंस एंड हार्ड वर्क. A 5-time world boxing champion, Mary Kom has fought battles not only in the boxing ring but also in her personal life, children. अब बेटा just imagine कि मैरी कॉम 5-time world boxing championship है. That's a big thing, है ना? 5-time world boxing championship उन्होंने जीती है. And उन्होंने बॉक्सिंग में, एवरीवन नोज दैट वन फाइट्स इन द रिंग्स. बॉक्सिंग में तो फाइट होती है, बट उन्होंने खाली रिंग में ही बेटा फाइट करके ही नहीं ये चैंपियनशिप्स जीती हैं. शी हैज फॉट बैटल्स इन अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो. अभी बेटा जस्ट कंपेयर हर सेल्फ. हम लोग का एक, आप लोग अपने आप को सोचो कि आप लोग का जो चाइल्डहुड है, तो यू सो कंफर्टेबल, आपको कुछ नहीं सोचना है ना? योर पेरेंट्स आर पेइंग योर fees, your parents have got a good job, everything is running smooth, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस पढ़ना और अपना कैरियर बनाना है. बट लाइफ वॉज नॉट दैट इजी फॉर मैरी कॉम. मैरी कॉम के लिए लाइफ इतनी इजी नहीं थी. उनको पर्सनल लाइफ में भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी. However, Mary overcame all the hurdles and achieved many more than many of us can possibly dream of. और बेटा जस्ट इमेजिन कि हम तो इतने कंफर्टेबल, सब कुछ हमको इजीली अवेलेबल है, उसके बाद भी हम अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पाते. रादर हम तो इतने ड्रीम्स के बारे में सोचते ही नहीं है. एंड इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद मैरी कॉम, बेटा जो हम सोच भी नहीं सकते, और मतलब उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स में रह के वो सब कुछ अचीव किया. एंड शी हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ. एंड जहां वो आज है, और इफ वी रीड अबाउट हर लाइफ, मतलब वील बी सरप्राइज कि हाउ डिड शी रीच सच हाइट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. बट द मेन थिंग बिहाइंड हर सक्सेस इज हर हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन. कि उनका हार्ड वर्क, कि उन्होंने लगातार मेहनत की. शी वॉज डिटरमाइंड कि नहीं, जो उन्होंने चाहा वो उनको बेटा पाना ही था. एंड देन शी डिड नॉट लूज हर पेशेंस, कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो घबराई नहीं. शी डिड नॉट स्टेप बैक, शी वॉज फर्म एंड रिजिड. एंड फाइनली, in spite of all the problems and difficulties, she achieved what many people cannot even think of, even dream of. Like many other sportsmen, Mary Kom's success is an inspiration, but it becomes even more meaningful when we consider her background. बेटा बहुत सारे sports persons हैं, है ना? There are lots of sports persons. We read, we see them on the TV, है ना? हम बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का देखते हैं कि हाँ, इन लोग ने कितने आगे बढ़ गए, and they have achieved such great heights. But मैरी कॉम का जो बेटा सक्सेस है, that's an inspiration. वो हम सबको इंस्पायर करता है. We must learn from her life. She is really an inspiration for all of us. And वो इसलिए और मीनिंगफुल है व्हेन वी लुक बैक एट हर बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मतलब कि वो किस फैमिली से आती हैं, किस स्टेट को बिलोंग करती हैं, और कितनी एडवर्स सिचुएशन के बाद भी शी हैज अचीव्ड
so much in life. She has achieved such great heights. Mary was born on 1st March 1983 in a tribal community in the clashes-ridden state of Manipur. Beta Mary, she was born on 1st March. Mary, beta, 1st March ko she was born in 1983 in a tribal community. And I hope everybody is aware that जो tribal communities होती हैं हर state की, बेटा ये बहुत backward होती हैं, है ना. इधर मतलब उतना एजुकेशन नहीं होता है, इनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती है. दे डू नॉट हैव दोस फैसिलिटीज, है ना. एंड स्पेशली बेटा मणिपुर की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ये बहुत क्लैशेस रिडन है. आपस में ही इनमें बहुत क्लैशेस होती रहती हैं. लाइफ इज नॉट दैट इजी वहां पे. मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी से होने के बाद में मैरी कॉम इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई. दिस इज रियली सरप्राइजिंग. हर फुल नेम इज मांगटे चुंगनीजांग मैरी कॉम. वो ट्राइबल कम्युनिटी की है तो उनका नेम भी वैसा ही है. हर पेरेंट्स वर पुअर फार्मर्स. एंड बेटा जो ट्राइबल्स होते हैं आपको पता है वो मेनली फॉरेस्ट पे और फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं, है ना. तो जो मैरी कॉम के भी जो पेरेंट्स थे वो पुअर फार्मर्स थे. दे वर वेरी पुअर एंड वो फार्मर्स थे एंड वर्कड हार्ड इन फील्ड्स. और वो खेतों में बेटा बहुत मेहनत करते थे. एज द एल्डेस्ट ऑफ अ सिबलिंग्स. बेटा सिबलिंग्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सिबलिंग्स? जो रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, है ना. चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं वो आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं. जो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं दे आर नोन एज सिबलिंग्स. तो जो मैरी कॉम थी शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स. जितने भी भाई बहन में थे सबसे बड़ी कौन थी बेटा? मैरी कॉम. मैरी टुक केयर ऑफ देम फ्रॉम अ वेरी यंग एज. और मैरी जो बेटा बहुत यंग एज की थी तब से ही उन्होंने अपने पेरेंट्स की देखभाल करना स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज शी हैड रियलाइज दैट शी was the daughter of poor farmers and she really had to work hard to help her parents. So as the eldest of her siblings, Mary took care of them from a very young age. तो बहुत छोटे से ही मैरी कॉम ने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना बेटा. She started taking care of them from a very young age. That means when she was very small. Moreover, she used to help her parents earn their livelihood by working in the fields and cutting wood after school hours. आप छोटी थी तो वो क्या करें? How to help the parents? So she used to work in the fields. वो खेतों में काम करती थी अपने पेरेंट्स के हेल्प करने के लिए. And she used to cut wood after school hours. और स्कूल खत्म होने के बाद वो आती थी तो वो लकड़ी भी काटती थी. Why? To help her parents. She knew that her parents were poor and they were farmers. So, as the eldest of the sibling, she realized that it is her responsibility to help her parents. और बेटा ये आप लोग भी जानते हो कि अगर घर का जो सबसे बड़ा भाई बहन है अगर वो अच्छे काम करता है, वो पेरेंट्स को हेल्प करता है, ऑटोमेटिकली बेटा जो छोटे भाई बहन है वो भी उनको फॉलो करते हैं. इट हैपेंस. सो मैरी कॉम, she was the eldest of the siblings, so she started helping her parents from a very young age. She started working in the fields. वो fields में काम करने लग गई. Then she used to cut wood after the school hours. School खत्म होने के बाद मैरी कॉम क्या करती थी? She used to cut wood. अब मे बी वो wood या तो वो firewood के लिए यूज करते हो for cooking or for selling. So whatever, she used to help her parents. Mary was extremely interested in playing different kinds of sports during her school days. अब बेटा स्कूल डेज से ही मैरी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड. बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी इन प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स. मैरी को स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स खेलने का बेटा बहुत ज्यादा, शी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा शौक था. So children, I have explained page number 73 of lesson 8, Magnificent Mary. I am sure all of you must have
been inspired by reading about Mary Kom, and I'm sure even you would now think about being determined of achieving your goals. And children, remember, there is no shortcut. One must work hard, and then you will surely achieve your goal. But children, please do read this lesson so that when I explain the rest of the lesson, it will be easier for you to understand. Children, that's all for today. But before I end, children, I'm sure all of you must have written the word meanings and the meaning of phrases in your English notebook. Children, please read this lesson in your free time and do revise all the taught lessons as your half-yearly exams are approaching. That's all for today. Thank you, children. Have a good day ahead.